Welcome back, students. Earlier you all have learnt about transitive and intransitive verbs. Today I am going to teach you about subject-verb agreement. Subject-verb agreement, what it is, if the subject is plural, the verb should be plural. And one thing you should keep in your mind, that is verb always plural, remains plural. If you want to change it, then you will have to add to it s or es. Okay. अपार्ट फ्रॉम जैसे नाउन को हम कैसे चेंज करते हैं, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस लगाते हैं. नाउन जैसे बॉय को चेंज करने के लिए बॉयज करेंगे प्लूरल में. बट मैंने क्या बोला आपसे, वर्ब ऑलवेज रिमेन्स प्लूरल. वर्ब जैसे लाफ, LAUGH, ये हमेशा ही वर्ब हमेशा ही प्लूरल रहते हैं. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर करना होगा. अगर यहाँ पे बॉयज लाफ होता, देन द सेंटेंसेस करेक्ट. बॉयज लाफ, लड़के हंसते हैं. बट इफ देयर विल बी राम, देन राम लाफ करेंगे, देन वो रॉन्ग हो जाएगा. फॉर दैट वी विल हैव टू चेंज इट फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर. laughs करेंगे. Okay, Ram laughs will be correct. So verb, subject and verb agreement is that if the subject is singular, you should use singular verb, and if the subject is plural, then you should use the plural verb for it. Okay, many more points are there. The first point is the introductory there. Introductory there means in the starting it will be there, then you will have to see whether the numbers are singular or whatever number is there वो singular है या plural है, वो आपको देखना पड़ेगा. जैसे there is a boy standing in front of the main gate. There is a boy, तो one boy, there is one boy. Okay, तो there is, उसके बाद क्या है, one बॉय है. तो यहाँ पे सिंगुलर दिख रहा है कि एक ही लड़का है. देयर आर मेनी बॉयज स्टैंडिंग. आर मेनी बॉयज, मेनी बॉयज जो हैं वो आपके कौन से नाउन हो गए, प्लूरल नाउन हो गए. तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब आपका आर होगा. ओके, आई विल शो यू विथ एग्जाम्पल. इंट्रोडक्टरी, इस पॉइंट को हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी. देयर आर three boys standing. So here what is this? This is the plural. If so, that's why plural helping verb has been used. If it is written after there is only one girl or only one boy standing near the main gate. ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं आप सेंटेंस को. देयर इज ओनली वन बॉय. सॉरी, वन बॉय. तो यहाँ पे वन बॉय इज डिनोटिंग दैट द नाउन इज सिंगुलर. तो जब सिंगुलर नाउन रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर रहेगा. दिस इज योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इफ द सब्जेक्ट इज व्हाट इट इज, सब्जेक्ट इज प्लूरल, देन वर्ब विल बी प्लूरल. द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, so you will have to use singular verb there. Next point is if the subject consists of two or more singular nouns or pronouns, we generally use a plural verb. Again, same, subject is two or more singular nouns. This I will show you with an example. Singular nouns, subjects are of two or more singular nouns. So it is, one example is there, Ram and his friends. Then Ram is here, Ram and his friends. Here it is plural noun. This is, so the verb will be plural. Ram and his friends are. Okay, so are playing.
when the subject are two, what it is, Sanjana and Anjana are sisters. One example is there. Here it is plural. Then you are using are. It is understood. But here also Ram and Shyam. It was given Ram and Shyam. If it is there, Ram and Shyam written, then also you will use are over there. Okay. But it is two or more singular nouns. Ram, Shyam, and more it is there. Ram, Shyam, and Sita. So again, three singular nouns are there. So these are altogether plural. So if the subject is plural, so we will use the helping word plural here. Ram, Shyam, and Sita are playing. Third point is when two nouns refer to one person, place, or thing, we use singular verb. Two nouns refer to one person. Here you can see with the help of this example that my friend and cousin is with me. The same person is the speaker friend as well as cousin. My friend and cousin. To understand this point, here is an example. The principal and the director of the school is my friend. See very carefully, two nouns are there, the principal and the director. Two nouns refer to one person. Here the single person is the principal also and he is the director. जो director है स्कूल के वही principal और वो उस person के friend है. So here both the nouns are referring to only single person. So is it is helping word is. अगर एक ही पर्सन के बारे में दो नाउन्स बता रहे हैं, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, द हेड बॉय एंड द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास इज माई बेस्ट फ्रेंड. दोनों ही हेड बॉय है या फिर मॉनिटर है, दोनों ही एक ही पर्सन के बारे में कह रहे हैं और वो उसका फ्रेंड है, तो आर नहीं यूज करेंगे, इज यूज करेंगे. सो आई होप हियर यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल दीज 3 points. Many more points are there. You go through it. Examples are also given. The thing here you have to understand that if the subject is singular, we will have to use the singular verb also, and if the subject is plural, you should use plural verb over there. Plural verb के साथ plural subject के साथ plural verb use होगा और singular subject के साथ singular verb use करेंगे आप. After this, children, one more point is there in verbs chapter, that is your weak and strong verbs. Weak and strong verbs. ये क्या होते हैं? Weak and strong verbs. हम हमेशा लाभ है तो लाभ ई लगाएंगे. वीक वर्ब्स के लास्ट में हम यूज करते हैं क्या? ई या फिर डी और टी. वी यूज दिस टू the past form of the verbs. Plural. If it is a strong verb, then we change the vowel. Vowel change कर देते हैं. जैसे इसके एग्जाम्पल्स हो गए लाभ की स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट. इसके अलावा जंप, जंप्ड, जंप्ड. ईडी लगा देंगे या फिर बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट. बट योर स्ट्रॉन्ग वर्ब्स उसमें चेंज हो जाता है. स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में देखिए आप, स्ट्रॉन्ग में हम वॉवल चेंज कर देते हैं. स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में हम
What will be the past tense? Arose. Arose. Okay. The past tense of arise is arose, and past participle arise, arose, arisen. Rise, rose, risen भी होता है rise. The sun rises in the east. Rise, rose, risen. Rise, rose, risen, and then eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten. यहाँ एक बहुत ही important concept है, वो आप समझ लीजिए. First, the most important thing here, you can see this is your past tense. Okay, this is your root verb, this is your past tense, and this is your past participle. Past participle. Okay, ये सारे जो हैं verb, root verb, जब भी आप vowel, strong vowels के change करेंगे तो आपके इस तरह से आपका vowels change हो जाएगा. Past tense and this is past participle. अभी past tense को V2 बोलते हैं, इसे V3 बोलते हैं. Perfect tense कहते हैं ना, perfect tense. Have, had के साथ हमेशा perfect tense लगता है. And here V2 past tense लगता है. Simple past में आप इसको use करेंगे. Simple past में आप इसे use करेंगे. So you go through it once. Again I will send another video. In that I will extend and it will be in more detail. Okay children, till here you see this video, go through these two chapters and topics, that is subject and verb agreement and your weak and strong verbs. Okay, and we will discuss in the Zoom class also. Thank you, have a nice day.